Hello and welcome to Sky247.net presents Not Just Cricket. And I had a wonderful intro plan, but I'm going to do it on top of my head, which is it's Chennai versus Mumbai. We're building towards Mumbai and Chennai. What used to be, top of the table clash or battle for the championship has been reduced to the battle to avoid the wooden spoon. Unfortunately, thank you, gentlemen, for joining me. Wasim and Nikhil, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? Because I mean, do you think either team will be able to win and make it even to the top four, or is this just a game of pride now? So I'll start with you, Nikhil. देखिए, वो भरोसा, वो बिलीफ सिस्टम तो होना जरूरी है, चाहे मुंबई का रास्ता मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन 8 में से 8 जीतते हैं, 16 अंक अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो एक वो आउटसाइड चांस है। इतना लंबा ये टूर्नामेंट है, आपको अपनी कला में वो भरोसा दिखाना। आज चाहे एकदम लास्ट में है मुंबई, लेकिन 3 मुकाबले जीतते हैं, बीच में कोई और टीम जो ऊपर है वो 3 मुकाबले हारती है, लंबा टूर्नामेंट कुछ भी हो सकता है, और चेन्नई के लिए भी। सो दैट बिलीफ हैज टू बी देयर कि हमने जाके ये लगातार 3-4 मैचेस जीतने हैं, उसके बाद एक मैच पर मैच लेंगे, बट बिल्कुल चांस है। और आपको इस प्रतियोगिता में कोई नहीं कह सकता कि आप बाहर हो गए, बिकॉज अभी भी वो बाहर नहीं हुए। 16 अंक के साथ उम्मीद पे दुनिया कायम है। बतौर खिलाड़ी अगर आज मैं मुंबई के वो खेमे में होता, ड्रेसिंग रूम में होता, मैं तो उसी भरोसे के साथ उतरता कि आज मैंने मुकाबला जिताना है, 2 अंक प्राप्त करने, उसके बाद अगला मुकाबले के बारे में सोचूंगा, लेकिन आज तो जीतने के लिए ही सोचना है। Yeah, and Wasim, I love that attitude, Nikhil. Wasim, आप भी ये बात से सहमत हो कि कुछ भी हो सकता है, as we know? जी हाँ, बिल्कुल करिश्मा। आई थिंक यू कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी। पॉसिबल तो नहीं है, बट डेफिनेटली मुश्किल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो टीम के अंदर वो बैलेंस नहीं है, वो बॉलिंग अटैक नहीं है, बट यू कैन नॉट रूल आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉप ऑफ द टेबल क्लैश होता था, जैसे हम लोग एल क्लासिको बोलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस सीजन नोबडी प्रेडिक्टेड एट द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल कि जब मुंबई सीएसके खेलेगा दे विल बी सिटिंग ऑन द 9th and 10th पोजीशन, so which is very unfortunate, but I think they'll play for the pride. और जैसे निखिल ने कहा कि if you win couple of games you never know, जब momentum आपके पास आता है you suddenly start winning, तो you cannot rule out anything, especially I feel CSK have started to play well. I think they were very close to winning the second game. Unfortunately they lost. Mumbai obviously has to come to the party. They have to get onto the winning board and then take it from there. You get one win, you get another, and then you try and come into that role. So hopefully that happens for both of the teams. So let's see a good game of cricket today. And what will Jaydev and the coaches be telling the team? Fleming, what will be the team talks? आज क्या होगा? What will be they telling the team? Like you said, Nikhil, आपने जो पहले कहा था that you'd be telling them anything can happen. जी बिल्कुल, आप बतौर कोच और बतौर खिलाड़ी भी आप वो दोबारा वो शब्द अपने कानों में सुनना चाहते हैं सपोर्ट स्टाफ से कि आप जाके अपना बेस्ट कीजिए। देखिए, अंत में आप रिजल्ट को कभी जिंदगी में किसी भी कार्य में कंट्रोल नहीं कर सकते। आप जो है अपने प्रोसेस को कंट्रोल कीजिए, जो हमने योजनाएं बनाई हैं, जो विपक्षी टीम के खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ जो प्लान्स हैं उनको अमल करने को देखिए। और 120 गेंदें, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो 120 गेंदों का फॉर्मेट आप देखते हैं, 120 गेंदें अच्छे से खेलने को देखें। फिर जब आप गेंदबाजी करने आएंगे तो 120 गेंदें फिर अच्छी सी बॉलिंग करने को देखें। तो वो हर चीज को आप ब्रेक डाउन कर देते हैं और फिर देखिए अंत में आपके बड़ी पिक्चर बनती है। वो कहते हैं ना, छोटे छोटे आप डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तभी तो वो बड़ा दृश्य बनता है। मुंबई चाहे वो सारे मुकाबले हारती आए, कुछ मुकाबले कृष्णा ये क्लोज भी रहे थे, जैसे 18 रन से हार गए, 12 रन से, वो मुकाबले 2 हिट इधर लग जाती, 2 हिट उधर लग जाती तो कुछ हो सकता था। चेन्नई भी जो एक मुकाबला जीते वो शिवम दुबे और
रॉबी ने अद्भुत बल्लेबाजी की, तो वो क्षमता है दोनों टीमों में, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मुंबई के लिए भी आप देखें, इंडिविजुअली एक मुकाबले में ब्रुविस ने आके अच्छी बल्लेबाजी की, एक मुकाबले में सूर्य ने अच्छी कर दी, फिर स्टार्ट में ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की, बट वो 2-3 लोग मुकाबले खत्म नहीं कर पा रहे, दे हैव नॉट बीन एबल टू क्रॉस दैट फिनिशिंग लाइन। तो उम्मीद करते हैं उनके लिए आज शायद वो दिन हो। उम्मीद मैं भी करती हूँ। चलो बात करते हैं ऑन मुंबई। द लोएस्ट टोटल कंसीडर बाय मुंबई सो फार, bowling first, has been 193. Do they need to start with Bumrah and set the tone right? Wasim, 193. Do they need to start with Bumrah and set the tone right away? आपको क्या लगता है? I think so. I think मुझे लगता है कि when you bowl your best bowler in the first over, it does send a message. आप ऋतुराज गायकवाड़ थोड़े खराब फॉर्म से आ रहे हैं वापस. Robin Uthappa can get out to the incoming delivery, and Bumrah, is known for that. So you don't mind Bumrah bowling the first over and bowling another one, probably fourth or fifth over. You want to bring your best bowler. You don't want to bring him जब आपके सामने वाला बैट्समैन ऑलरेडी 30 पे बैटिंग है एंड दे आर 40 फॉर नो लॉस. यू डोंट वांट टू डू दैट. तो आप अभी उस सिचुएशन में हो जहां पर मुझे लगता है थोड़ा आपको स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी. जो आप 11वां ओवर या 12वां ओवर बुमराह से डलाते थे, मे बी यू डोंट नीड टू डू दैट. अगर बुमराह आके 2 ओवर पावर प्ले में डाल के आपको 1 या 2 विकेट दिलाते हैं, तो you can get that momentum. So I feel, of course, they need to probably start with Bumrah and bowl him another over in the power play. So use him at 2 in the first power play, and then maybe use in the death, or maybe use one in the middle overs and one in the death. So of course, they need to probably change their strategy a little bit, Karish. Nikhil, आप इस बात से सहमत हो? You agree with Wasim that they do need to send the strategy a little bit? बिल्कुल सिंपल सी चीज है. विपक्षी टीम अपने जो 2 सलामी बल्लेबाज भेजते हैं, या टॉप 3 बल्लेबाज आपकी विपक्षी टीम के बेस्ट बैट्समैन होते हैं. आप अपनी टीम के जो बेस्ट बॉलर है, यू हैव टू गिव हिम द अपॉर्चुनिटी कि उनको आउट कर सके. आप अगर उनको स्टार्ट दे रहे हो तिलक वर्मा से, जो पार्ट टाइमर है, जो शायद एक ही ओवर डालता है या मैक्सिमम दूसरा डाल देगा, आप सिर्फ ओवर निकालने की सोच रहे हैं. यू कैनॉट गो इनटू अ गेम थिंकिंग नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ कि मैं ओवर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या हम ओवर बचाने की कोशिश कर रहे हैं. आप जाइए 2 ओवर डालिए. ये रणनीति जो चलती थी जसप्रीत बुमराह को, जैसे अभी वसीम ने कहा कि 11वें 12वें ओवर में आप बॉलिंग कराते थे, ये तब चल जाती थी क्योंकि ट्रेंट बॉल नया बॉल से संभाल लेता था. तो आप बीच में गेम को कंट्रोल करने के लिए, फिर से विकेट लाने के लिए आप जसप्रीत बुमराह को लेके आते थे. लेकिन अब आपको गेम प्लान बदलना पड़ेगा क्योंकि आपके पास बोल्ट जैसा गेंदबाज नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट आपके रिसोर्सेज का अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकें. Absolutely. हम बात करते हैं अभी चेन्नई की. Such a narrow defeat against Gujarat, but plenty of positives. Gaikwad looked good in good form, and Tikshana seems to be growing into his role. Isn't that so, Wasim? Yeah, of course. So मुझे लगता है थोड़ा बैटिंग में भी उनको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा कि ऋतुराज has come into form. Tikshana has performed in twice in a row. तो both ends पे, बैटिंग एंड bowling ends पे, they've got good start. और गुजरात का मैच, of course, they should have won. Unfortunately, that 18th over happened where 25 runs came off, which can happen. But I think Chennai is ticking most boxes. जो बैटिंग होती है, Robin Uthappa has come good. Now Ruturaj has come good. Raidu has looked really good. Shivam Dube has been very, very good throughout the tournament, and Tikshana as well. Bowling में sometimes I feel they could have gone back to Pretorius. मुझे ऐसा लगता है maybe Jordan की जगह पे you need to think on playing Pretorius, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे and you benched him. और जॉर्डन वो काम अभी तक नहीं कर पाया. जिस चीज के लिए वो माने जाते हैं डेथ बॉलिंग के लिए, he hasn't come good. But Tikshana का फॉर्म और ऋतुराज का फॉर्म will give them confidence going forward. Okay, let's take a look at the numbers tracker powered by sky247.net. चलो देखते हैं. Okay, so first is Ishan Kishan along with Rohit. Let's see, Kishan's lack of aggression, is that hurting Mumbai, Nikhil? Nikhil? Okay. Yeah, I think Kishan,
So He's yeah, back. go ahead. Yeah. Nikhil? Okay, these are the शांत personals इसलिए हो गए I कृष्ण? live. But Nikhil, please chaliye. I'll leave it to you. जी, नहीं देखिए ईशान पहले मुकाबले में उन्होंने रन बनाए थे, अब क्योंकि उसके बाद रोहित का बल्ला थोड़ा-सा शांत हो रहा है, तो शायद वो उनकी वो सोच ये है कि मैं शीट एंकरमैन का रोल अदा करने को देखूँगा, तो वो थोड़ा-सा वो अपनी विकेट को बचा के खेलने को देख रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं इस प्रतियोगिता में या टी20 फॉर्मेट, ये ऐसा फॉर्मेट है कि आप जाके निडर होके खेलने को देखें। यू हैव टू गो आउट देयर एंड प्ले दैट ब्रांड ऑफ फियरलेस क्रिकेट, तभी वो आंकड़े बेहतर होंगे। 2022 में 117 का स्ट्राइक रेट, वो इस साल इसलिए है क्योंकि यू आर ट्राइंग टू शोल्डर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द अदर गाइज नॉट फायरिंग इन द टीम एज वेल। और ये लाजमी सी बात है, क्योंकि अगर अब विकेट्स गिरती रहेंगी तो कोई भी बैट्समैन जो है वो एक पार्टनरशिप बिल्ड करने को देखता है। Yeah, and I think again, अगर आप देखें करिश्मा 2020 में he got more than 500 runs, वहां पे strike rate was 145, and if you see the last year and this year also, the strike rate is way below. So it does tell you that when he plays at a very high strike rate, he performs also. So he needs to not worry about कि मैं इतने बड़े प्राइस टैग में आया हूँ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी शोल्डर करनी है और मे बी 16-17 ओवर तक को टीम को ले जाना। आई डोंट थिंक ही नीड्स टू थिंक दैट वे, ही जस्ट नीड्स टू बी हिज अग्रेसिव सेल्फ, जाके अपनी अटैकिंग क्रिकेट खेले जिसके लिए वो माने जाते हैं। एंड देन वंस ही कम्स गुड, इफ ही गेट्स 70 and 80, automatically the team will get 180, 190 and even 200. So he doesn't need to worry, he just need to be his, play his natural game of attacking cricket, whether it's in power play, whether outside power play, and then automatically I feel Mumbai's batting will look good. Yep, I mean anything can happen. Okay, if there is one team Pollard loves to dominate, it's Chennai. Can he inspire Mumbai tonight, Nikhil? चेन्नई के खिलाफ इनके आंकड़े बहुत बढ़िया है। जिस तरीके से उन्होंने वो जो रन बनाए हैं, वो देखिए 569 रन है, औसत लगभग 38 की, स्ट्राइक रेट 172 का, 4 अर्धशतक और विकेट्स भी देखिए, विकेट्स भी चटकाते। तो कुछ टीमों का होता है कि द प्लेयर इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, और मुझे लगता है पोलार्ड का चेन्नई के खिलाफ वैसे ही है। जिस तरीके से आप उनके खिलाफ गेंदबाजी करने को देखते हैं, किस लेंथ पे डालने को देखते हैं। सो आई गेस सो होपफुली मुंबई सेक द बिग मैन कम्स टू द पार्टी, क्योंकि इस साल अब तक उनका बल्ला बहुत ही शांत रहा है करिश्मा। मैच विनर है, लाइक होपफुली it's about time, put it this way, it's about time. Okay, fair enough. The next battle we have is between two West Indian legends at the death. It's going to be a very interesting deciding factor. It's Bravo versus Pollard. Wasim, Yeah, I mean, अगर आप देखें करिश्मा, तो he's got strike rate of 169, but Pollard also has got him out 7 times. तो बहुत even Steven battle है. He scored 223 runs also out of 132 balls. So that does say that Pollard likes to hit him, but Bravo has also had a wood on him. So मुझे लगता है बहुत interesting battle होगा. Bravo bowls in the death when Pollard is batting. तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग बैटल होने वाला है, एंड अ प्लेस वेयर मुंबई इंडियंस यूज्ड टू प्ले, पोलार्ड हैज प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट देयर एट वानखेड़े, so I think he'll enjoy playing there. It's not a big ground, so it's going to be an interesting battle. Another interesting battle would be Sky and Jadeja. Jadeja has dominated Sky in the past. Can this be the deciding battle in the middle and late overs? जी देखिए, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्काई एक ऐसे बैट्समैन है जो रन बना रहे हैं कंसिस्टेंटली, रन बनाने नहीं दिए हैं। गेंदे ज्यादा है इस फॉर्मेट में, अमूमन आप देखते हैं कि 38 गेंदे होती हैं तो कोई बैट्समैन जो है वो 100-125 रन बनाने को देखता है, लेकिन इनकी गेंदे ज्यादा है। 50 बॉले हैं, 38 रन है, 2 दफा आउट किया, तो क्लियरली वो एक्शन से हो सकता है या जिस स्पीड से डालते हैं और जिस लेंथ पे डालते हैं, मे बी दैट्स ट्रबलिंग स्काई अ लिटिल बिट। बट ये बैटल जो है बैटिंग वाली, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहेगी क्योंकि बहुत कुछ निर्भर करता है स्काई के कंधों के ऊपर। Sky ke kandho ke upar, very well said. Let's take a look at the social tracker, please, powered by Sky247.net.
So let's look at our first tweet. This is another legend telling Yuvraj, congratulations on this splendid career, big fella, my partner in the 6-6s club, a fierce competitor who let his game do the talking, enjoyed sharing the dressing room with you, lots of love and good wishes. As we know, Pollard is retiring from international cricket, so a lot of love for him in the social world today. Let's take a look at the next tweet. A question on the timing before I go to the next one. Sorry, my director was just talking to me. A question on the timing because we know the World Cup is happening pretty soon, Nikhil. देखिए, मैं खुद हैरान हूं कि क्योंकि अभी हाल में वो कप्तानी भी कर रहे थे, क्या ये खराब फॉर्म अभी चल रहा है उसकी वजह से कर लिया, या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने शायद बोल दिया दैट हम थोड़ा आपसे आगे की सोचने को देख रहे हैं, बट you need one of the experienced campaigners in your side, और हम सबको पता है कि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं, when he gets going is a force to reckon with. So I guess जब रिटायर करते करिश्मा, वो एक सवाल रहता है ना, it's better to retire when people say why rather than भाई आप कब कर रहे हो, when. Wasim, why not? Wasim, who do you think would be appropriate to be the next captain For West Indies? For West Indies, yeah. You could have, I mean, I can see probably Nicholas Pooran doing that job. I feel he's done it few times for West Indies, and somebody who wicket keeps also, so he can see the angles. Somebody who's played a lot of IPL cricket, a lot of T20 cricket, somebody who's very successful. And you want to give it a captainship to somebody who performs, somebody who's a certainty in your side. So there's nobody better than, Nicholas Pooran, in my opinion, at this point. Do you agree with that opinion, Nikhil? जी, सीनियर कैंपेनर हैं, अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे, और मेरे ख्याल में जो वेस्ट इंडीज का खेमा है, मेरे लिए हमेशा कप्तान आप उसको चुनना चाहिए, या अपने आप को जो चुनता है, जिसके पास ड्रेसिंग रूम का सम्मान हो. He has to earn the respect of the dressing room, and I think Nicholas Pooran does that. Okay, fair enough. Let's take a look at our next tweets. So this is quite a funny one. It's from Crick Tracker itself, a battle of pride. I mean, who would have thought, Karishma, going into the IPL, okay, we will get to see this. Like I said before, number 9 or number 10 pe, somebody who has got 9 trophies between them. So it's something which shows the unpredictability of the game, or sometimes when the auction doesn't go well, or you haven't done well at the auction, strange things happen. So very unfortunate to see the two champion side playing for 9 and 10 position at the moment. I know, I agree with you. Let's see the next tweet. So this is a CSK sign Matisa Patriana as the replacement for Adam Milne and apparently he's meant to be the junior Malinga. I mean, that's what a lot of people with the fling action. So a lot of people are saying that he's the mini me of Malinga. So that would be quite interesting to see, right? Wasim, one of you. Yeah. I think he's somebody who played the Under-19 World Cup, if I'm not wrong. He must have modeled his action on. I think we've seen a few times in Instagram, Karishma. He's bowling with that slinky action. He's quite rapid. He's not slow. And हम बार देखते हैं कि IPL के अंदर that mystery bowlers, somebody who bowls with strange action, do come good. So I think it's not a bad addition, and we might see him play also. जिस तरह से CSK की bowling जा रही है, at the moment he's available. I won't be surprised he starts to play from ball, first game itself. Wow, that'll be very, very exciting. That was our lovely social tracker. Ab waqt aa gaya hai for our fantasy tracker. Let's take a look. Nikhil, this is your team. You've selected this team, so take us through it, please. कि ईशान किशन, लाइक आई सेड, चाहे अभी 117 का वो स्ट्राइक रेट चल रहा हो, पर वो बेहतर हो रहा, और उम्मीद करता हूं कि आज वो जाके वो फेयरलेस ब्रांड और क्रिकेट खेलें, जिससे कि पहले मुकाबले में वो खेल रहे थे. ऋतुराज गायकवाड इज गेटिंग बैक इनटू रिदम. पिछले मुकाबले में उन्होंने रन बनाए,
हमने देखा था बेंगलोर के खिलाफ रॉबी उत्तपा ने मुकाबला जिताया था, और जिस तरीके से शिवम दुबे ने वो मुकाबला जिताया था, वो दोनों की साझेदारी, रिवॉल्व ब्रोविस मेरे लिए उन्होंने he's taken the world by storm। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की राहुल चहर के खिलाफ वो 4 छक्के, सो तिलक वर्मा, जडेजा, ब्रावो, ये मेरे लिए ये आज के मेरे मैच विनर्स हैं, इसलिए मैंने इनको अपनी टीम में रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये सारे खिलाड़ी जो है चमके, एंड एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं ना करिश्मा, मजेदार मुकाबला होना चाहिए, और ये प्लेयर्स जो है ये अच्छा करें। Absolutely. Next up, let's take a look at the trivia sponsored by i247.net. Let's take a look. Okay, let's find out who are the missing men here. Let's take a look. So this is a scorecard for 2019, and these are the players that played for each team. Now, who is missing from each team? Which player is missing? मुंबई के लिए रोहित होंगे ऊपर, अगर if I'm not wrong. I think Rohit at the top, Bravo at the bottom. दीपक चहर, हाँ, 1 ब्रावो या point. दीपक चहर. 1 point to Nikhil. Oh, Deepak Chahar. So no Rohit at the top. Surya Kumar Yadav. No. Oh, ये कब 2000 पोलार्ड, और उधर वॉटसन. good one. Wow. Hmm. Let's take a look at the next one. In the scorecard you've just seen, what happened on the last ball? Shardul Thakur got LBW by Malinga. Yay! Yeah. And Mumbai Indians won by 1 run. 2 runs to win of the last ball. Do we have one more question? We have one more. Which umpire has officiated in the most number of Indian T20 League matches? Anil Chaudhary? Anil Chaudhary? Like? Look at me. I'm like putting a straight face. Like I would say. You could say Anil Kapoor and I will be like, shayad ho sakta hai, because I don't have the answer. S. Ravi? Is it S. Ravi? Actually, it is S. Ravi. Oh, nice. Yeah. Well done. Okay, Wasim, you've won. But Trivia Tracker was powered by Sky247.net, and that was that. Next thing, let's have a debate on India's fastest bowling stocks and who potentially makes the cut. Who makes the cut for the World T20? Let's see. This year, we've seen several contenders for those 4 or 5 spots. Apart from the regulars, who do you feel will make the cut, Wasim? No, because Wasim wants first. I think if I have to pick, 5 or maybe 6 just to shortlist, I would pick Bumrah, definitely. Harshal Patel, for sure. Then I'll pick Deepak Chahar if it's fit. Mohammad Shami, just to bowl new ball. If Deepak Chahar is not fit, then I'll go to Mohammad Shami. And then I'll keep T. Natarajan, as a backup. So those will be my 5 bowlers. The 6th bowler could be Bhuvnesh Kumar. It could be anyone, to be honest. I'm not, thinking about Shardul Thakur because I think his bowling has gone down a little bit. So I would either be thinking about Bhuvneshwar Kumar, maybe Prasidh Krishna. So those will be probably my, first 5 will be those, and the 6th one could be anyone who's playing well at that time. So no Umran Malik. Nikhil, what do you feel? देखिए मैंने भी वो नाम लिखे हुए हैं, बुमराह, शमी, ये तो आपके स्टार्टर्स हैं. दीपक चहर को मैं देखना चाहूंगा अगर वो फिट होते हैं, बॉल को मूव करा रहे नहीं करा रहे, एक जस्ट टू स्पाइस अप थिंग्स, एक लेफ्ट आर्म सीमर मे बी नटराजन, वो कैसा कर रहे हैं.
अदरवाइज हर्षल, क्योंकि जिस तरीके से वो डेथ में आके गेंदबाजी करते हैं, हर्षल को मैं रखना चाहूंगा, देखना चाहूंगा। एंड मलिक को जस्ट एज एक्सप्रेस कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे पे आके कर रहे हैं, एंड उनके लिए ऑडिशन रहेगा यहाँ से एशिया कप में अगर उनको मौका देते हैं, वो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस तरीके से जाके वो जिम्मेदारी निभा पाते हैं या नहीं। अदरवाइज मोहम्मद सिराज एक और विकल्प है जिनको आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, जिस तरीके की पिचेस हैं, थोड़ा सा कंधा लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा वो मदद भी मिलता है। बट उमरान मलिक के बारे में जरूर आप सोचना चाहेंगे, बिकॉज दैट्स रॉ टैलेंट। आप लॉकी फर्गसन को देखते हैं, जब रबाडा आके स्टार्टिंग में गेंदबाजी कर रहे थे, पेस दिक्कत जरूर देती है, और खासतौर से ऑस्ट्रेलिया विकेट्स के ऊपर, कि आप किस तरीके से बैट्समैन को परेशान करने को देखते हैं, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि आप उनको पहले एशिया कप में खिला के देखें। Okay, fair enough. Before I ask you the next question, हमारे पास एक update है. Mumbai Indians have 2 debutants. Rohit Sharma hands the cap to Riley Meredith and Hrithik Shakeen. So this is the latest update for. Nikhil, can you tell us more about Hrithik? If that's possible, if you know him more than I do. देखिए, ऋतिक को मैंने ज्यादा देखा नहीं है, बट जो मैंने सुना है कि वो बल्लेबाजी अच्छे करते हैं, और जिस तरीके से वो मुकाबले उन्होंने वो प्रदर्शन रहा है डोमेस्टिक में, इनका बहुत ज्यादा नाम चल रहा था डोमेस्टिक सर्किट्स में परफॉर्मेंसेस देके, बट बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं मुझे लग रहा है। रायली मेरेडिथ के बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर रहे थे कि थोड़ा सा गेंदबाजी का क्रम जो है थोड़ा सा और मजबूत करने को देखेंगे। सो आई गेस प्रेशर कि आप जो है खिलाड़ी ढूंढ रहे हैं जो आपको मुकाबले जिता सके, एंड आई गेस द सीनियर्स विल हैव टू कम टू द पार्टी, वो जरूरी। बट ऑल द वेरी बेस्ट टू द यंग मैन। Fair enough. Okay, so अगला सवाल है, shall the selectors consider the form more of past reputation? Wasim. I think form does matter, Karishma. I mean, आपके पास IPL का इतना बड़ा stage है, so you do have to pick them on the recent form. But the franchise cricket to the national cricket, जो international cricket होता है, is a big difference. We found out even last time also when Varun Chakravarti got picked after the IPL for the T20 World Cup. He was a completely different bowler. His confidence got बिल्कुल ही वहां पे जाके थोड़ा सा परफॉर्मेंस नहीं हुआ इन क्रंच गेम्स, एंड देन ही इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर दिस टाइम राउंड. So franchise cricket to international cricket is a big leap. So you would need to consider that, especially if you are picking him straight away in the ICC event. It's fine to pick anybody in the bilateral series, that is okay. So Indian selectors need to be careful about selecting a young player. Otherwise, form I feel is a very very vital. Somebody who is in form needs to play, क्योंकि वो form जब आप रहते हो, बहुत अच्छी चीजें होने लगती है, क्योंकि you feel कि you can do anything. So that form I feel is very very important. What are the key lengths for the bowlers in Australia, for fast bowlers, Nikhil? सिचुएशन पे डिपेंड करता है। आप जब पहले 6 में डालते हैं तो थोड़ा सा आगे डालने की कोशिश करते हैं, यू गिव द बॉल अ चांस फॉर the ball to do a little bit, so that if there's even that hint of movement, then you're able to extract that. And बहुत से bowlers का good length area सबका अलग अलग होता है। फास्ट bowlers का जैसे जसप्रीत बुमराह का जैसा एक्शन है, वो आगे की तरफ कम डालते हैं, because he's one of those hit the deck kind of bowlers. भुवी और दीपक चहर आगे डालने को देखेंगे क्योंकि वो बॉल को स्विंग कराने को देखते हैं। सो डिपेंड करता है कि कौन से बॉलर के हाथ में गेंद हो, बट सबकी कोशिश ये रहती है थोड़ा सा आगे डालने को देखें, सो दैट ऑफ द विकेट उनको कुछ मदद मिले। और उसी के कहने पे आपको बता दूं कि चेन्नई ने टॉस जीत लिया है, और क्या करेंगे कृष्णा टॉस जीत के, आप बताएं। Yes, प्लीज बताइए खुद। अब इस मैं बात आई वोंट बी सरप्राइज। हाँ, you knew this was going to happen. Whoever won the toss, you knew they were going to decide bowler. करेक्ट। बट वेरी क्विकली मैं एक सवाल वसीम से जानना चाहूंगा। ऋतिक को लेके आए, वो थोड़ी बैटिंग भी करता है, इमर्जिंग प्लेयर के स्क्वाड में भी था वसीम, और थोड़ी बहुत ऑफ ब्रेक भी डालता, तो वो थोड़ा सा कहीं पैनिक तो नहीं नजर आ रहा मुंबई के खेमे में?
बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं। रायली मेरिडिथ मुझे लगता है मेक सेंस, क्योंकि टाइमल मिल्स बहुत महंगे साबित हुए हैं जब जब अभी जो लेट में जो मैचेस खेले हैं, तो रायली मेरिडिथ को लाना आई फील मेक सेंस। बट ऋतिक शोकीन अगेन, यू प्लेइंग हिम अगेन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स प्रोबेबली, जो जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है सीएसके का। आप एक अंडर 19 प्लेयर को उनके सामने आप मौका दे रहे हो, ऑलरेडी आपके पास डिवाल्ड ब्रेविस है, तिलक वर्मा है, और आप उनको इनके सामने उतार रहे हो, तो इट डज शो के यू आर पैनिकिंग, यू आर ट्राइंग लिटरली एवरीवन, जो भी आपके बेंच में है। तो बट अगेन फॉर द यंगस्टर आई फील इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ग्रेट ऑफ थोड़ी सोच ये भी तो नहीं है कि मोइन अली को रोकने के लिए और शिवम दुबे के खिलाफ एक ऑफ स्पिनर के अगर बीच में कहीं एक आधा ओवर निकाल लो लेफ्ट हैंडर के खिलाफ, शायद Ali उस is सोच not से playing. खिला रहे हो। There are two changes for Chennai. Moin and Jordan are out. Torres and Satna are in. Moin is not playing. ओके, मैंने तो आपको मोइन नहीं खेल रहा, मोइन के ऑब्वियसली कोई निगल होगा। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई फील के आपके पास ऑलरेडी तिलक वर्मा है निखिल, तो यू कैन यूज हिम ऑल्सो। आपने उनको सिर्फ एक आधा ही ओवर कराया है, बट आई थिंक ऋतिक को उन्होंने मेनली, मुझे ऐसा लगता है, एज अ बैट्समैन खिलाया होगा, which is interesting to see. But again, saying that, like I always say कि पहले top four needs to play the maximum bulk of the overs. तो रोहित हो गए, ईशान हो गए, Dewald Brevis and Surya Kumar Yadav need to bat the bulk of the overs, at least the 15 overs. Then they are, good to go for 180, maybe 190. Or we are playing at DY Patil, Karishma. So we've seen the team batting first have won there. It's not that the chasing team have always won. So if they post 180, 190, Mumbai can, surprise the package, pack a punch. Okay, so before I let you go, because we are running a little short of time, we have 3 changes for Mumbai. Riley Meredith, Rikin Shakeen, and Daniel Sams are in for Mumbai. So those are the 3 changes. Janice Pella, I want to know your predictions. Which team are you rooting for? And we're gonna see the poll. उम्मीद करता हूँ मुंबई। I am also hoping that Mumbai wins it, just to even the contest. I hope they bat well, they get to good score and then defend it. थोड़ा सा मुझे लगता है कि tournament के लिए Mumbai need to come back, otherwise, they'll be down and out. The tournament will be over for them. So I hope Mumbai wins this one. Yeah, I think Mumbai should win. Like, I have lived in that city for 15 years, so थोड़ा मुझे भी लग रहा है कि चलो, I'll also root for Mumbai, and I should. वसीम, वो क्या कहते हैं आमची मुंबई। आमची मुंबई। And I'm very double dholki, I've realized. I'm very like disloyal. While I'm anchoring, I've realized I have no loyalty to anybody. But let's look at the toss quickly. Chalo dekhte hain. Poll. Let's take a look at the poll. I understood that. It's the poll. Is captaincy across all formats and Indian T20 League weighing on Rohit's batting? 79% say yes and 21% say no. I'm one of the 21%. No. Yeah, I would also say no. Yeah, I don't think he's that kind of a character who's going to weigh down by captaincy. So I don't think so. It comes naturally to him. Yeah. So to me, and he's only been captain for a long, short period. He hasn't captained in a test match for a long time. He hasn't captained in an ICC event. So he's only got it some time back. So I don't think so. It's going to weigh down on his batting as much. Okay, fair enough. Thank you, gentlemen. हम वापस मिलेंगे match के बाद. May the best team win. Hopefully Mumbai. Take care, gentlemen. See you later. See you. Bye. Thanks.